Hi all, can you see, can you hear guys? Can you see, can you hear? Hi all, I welcome you all to this session wherein I'll be giving you some tips on how to crack JEE in your first attempt. So this year is quite different because of the pandemic, and we have 4 attempts. That is a good news for each and every one of us because let us make good use of these 4 attempts, because होता क्या है कि most of the time, many of the cases, and this has happened a lot in the past, that there is only one attempt and people give that attempt, that they falter because of sometimes no fault of theirs, and they repent all their lives. So let us get going. So hi Akshat, hi Vinita, hi Sachi Gupta, hi Nirmala, hi Aditya. I hope you're all fine and doing healthy and all prepared to give this JEE Mains attempts. So guys, let me introduce myself before we start with the session. So I am Abhay Mahajan. I've done my engineering from IIT Roorkee. I've been teaching for the last 11 years for IIT JEE, for Olympiad, for Foundation, for NTAC, and I've been fortunate enough to have produced some wonderful ranks in IIT. And I hope सब लोग इस बार कुछ ना कुछ फोड़ेंगे, right? So this is my rank, guys. So in this session, I will be sharing what I did when I was preparing for JEE. So I'll be sharing some tips on how did I prepare, what did I do in the last 1 month or so. So हमारे time पे ना IIT used to be subjective. IIT used to be subjective, ठीक है? It used to be subjective, but उससे पहले screening होता था. It used to be, we used to have a screening exam which used to happen in December, and so in that screening, so my all India rank was 276, and उस time पे JEE Mains नहीं होता था, उस time पे एक exam होता था called IIT. So this was for exams to get admissions into all the other good colleges apart from IIT, all the NITs, all the other good colleges. This used to be that exam IIT. तुम बहुत सारी अगर books previous year देखोगे तो वहाँ पे IIT नाम का exam आता था, तो उसके अंदर मेरा AAR was 436. So I will be sharing what I did in the last 1 month before that exam, and I'll be sharing some tips. Hopefully those tips will be wonderful and useful to each and every one of you, right? So let us get going. I'm very sure बहुत सारे बच्चे इस time पे nervous हो रहे होंगे, and which is very obvious, and believe me guys, being nervous is one of the good things, right? We should know how to make good use of that situation when we are nervous, when we are very जब हम डरे हुए होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. The good part is, since we have 4 attempts, but bad part is, since we have 4 attempts, people tend to take those attempts very lightly. कि पहला फरवरी का अटेम्प्ट है, वो तो यार मॉक है, देखेंगे उसमें क्या होगा. अब मेरा असली अटेम्प्ट तो मार्च में होगा, मेरा असली अटेम्प्ट तो अप्रैल में होगा. डू नॉट डू दैट थिंग, बिकॉज इफ यू स्टार्ट टेकिंग एनी एग्जाम लाइटली, इट विल गो लाइटली, कभी भी तो इंप्रूव नहीं कर पाओगे. सो डू नॉट गो कि फरवरी तो पहला अटेम्प्ट है, भर देते हैं, बट मेरा एक्चुअल अटेम्प्ट तो मार्च होगा. डू नॉट डू दैट. बिकॉज अगर तुमने मार्च के लिए रखा है तो मार्च में तुम यही बोलोगे कि मेरा असली एग्जाम तो अप्रैल में होगा. अगर अप्रैल में करोगे तो मेरा असली एग्जाम तो मई में होगा, और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि 4 अटेम्प्ट निकल जाएंगे और तुम कभी किसी भी अटेम्प्ट में अच्छा नहीं स्कोर करें. सो दिस इज द टाइम गाइज, दिस इज द टाइम यू हैव टू गिव दैट एग्जाम एज इफ दिस इज द ओनली एग्जाम. You have to give the February attempt, जो अभी फरवरी में attempt आ रहा है JEE Mains का, as if this is the only attempt which will be there this year. अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया है. नहीं अच्छा हुआ, मार्च में और मेहनत करेंगे. अच्छा हुआ और बढ़िया है. नहीं अच्छा हुआ, अप्रैल में और ज़्यादा मेहनत करेंगे बच्चों, और फिर मई में पूरी एफर्ट्स लगाएंगे. बट February has to be the best attempt. ठीक है, पूरी कोशिश से, पूरी जद्दोजहद से इस फरवरी अटेम्प्ट को देना चाहेंगे. बिकॉज बहुत सारे बच्चे, आई नो मेनी स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, मेरे कांटेक्ट में हैं, जो अभी भी मुझे ये बोल रहे हैं कि फरवरी तो हमारा मॉक है, फरवरी तो एक तरह से टेस्ट है, वैसे ही एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं, असली तो मैं मार्च में दूंगा. डू नॉट डू दैट. सो गाइज, do not do that. Do not take February exam, light exam, or just an exam for your experience. Do give this exam as if this is the only attempt you will ever give. Then only you will have some good score of your standards, right? First of all guys,
there will be very many people जो कि अभी बहुत confused होंगे, बहुत ज़्यादा nervous होंगे and बोल रहे होंगे कि I can't do it. Please remember this example, guys. This is the example of the latest series which was conducted in India versus Australia series. In Australia, there were the team of all the new players which were pitched against the experienced Australian sides. They had almost zero experience. The 4 bowlers which India played in that very test match they had the combined wickets of 13. They had the combined wickets of 13 and they were pitched against a team which had 1013 wickets. So this was the comparison. So if they can do it, we all can do it. अगर ये लोग कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, कोई भी छोटा नहीं है. So please, can't का ना टी हटा दो अपने दिमाग से. Can't का टी हटा दो. ये मत सोचो, do not think कि मैं नहीं कर सकता February exam. I can do it. If anyone can, I can. This has to be your spirit, guys. This has to be your spirit. अगर कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ. This is something that we need to learn from what happened in Australia, right? A bunch of new players, all new players, and they did the unthinkable, and we all can do it. If they can do it, we all can do it, and this has to be the mindset, right? All right. So guys, one important thing, जो IIT का एग्जाम होता ना, IIT का जो एग्जाम होता था, we talk about JEE Mains, we talk about JEE Advanced. It used to be a good exam. Good exam मतलब there used to be new set of questions which would come every year. Now तो उस टाइम पे क्या माइंडसेट होता था कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका IIT क्लियर हो जाएगा. इंटेलिजेंट बच्चा वुड ऑलवेज क्लियर दैट एग्जाम बिकॉज नॉर्मल बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं लगते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एरा व्हेन IIT यूज्ड टू बी सब्जेक्टिव. द गेम हैज चेंज्ड टोटली. It is not a game of intelligence or question now. It is a game of hard work. And this is one of the most important sayings. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. And this holds true. This holds true for each exam that we are giving, all the exams that we're giving these days. So hard work will always beat the talent. So if there's a talented person who is very intelligent but is not working hard, hard work, a person who may not be that intelligent but is working very hard, he can beat talent. And this is one of the most important things. And this used to be my the poster of this used to be in my room when I used to prepare for IIT, because मुझे पता था कि मैं जब कोई एक चीज़ करता था ना अपने starting के time पे, I used to be very average in physics. I used to be very poor in chemistry. I would take a lot of time to do something which other people would do in 1 hour. So अगर कोई सामने वाला बच्चा 1 घंटे में कोई काम करता था ना, I would take 3 hours. I would take 3 hours to do that amount of work, because to sink in whatever has been taught in the class, and I would take a lot of time. I would take a lot of time. I would do a lot of examples. जो normal बच्चों को 5-6 examples में समझ आता था, मुझे 15 examples में समझ में आता था. But I never left that. I did not leave that. ठीक है? I kept on doing it. I kept on doing it. I did not lose heart, and ultimately I got into IIT. So this is one of the most important things which I like. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. And this you should all remember, guys. Very important. Very important. Right. So guys, please believe in yourself. Please believe in yourself, because this is the time to believe in yourself. This is the time for positive mindset. And if you have a positive mindset, you can do wonders with everything. Right? Chalo. So guys, let me start this session by saying that there are 3 kinds of people in the world. दुनिया में ना 3 तरीके के लोग होते हैं. There are 3 kind of people in the world. There are potato peoples, there are people of the kind egg, and there are some ones जिनको coffee people बोलते हैं. So there are 3 kind of people in the world: potato people, egg people, and coffee people. And they all have a common enemy. They all have a common enemy. The enemy is called boiling water. The enemy is called boiling water. So it is your attitude which decides which kind are you. Your attitude, how you react, because these 3 things react differently to a common enemy, which is the boiling water. So how does a potato react to the boiling water? So potato is hard. It looks hard.
but when it faces this boiling water, it becomes soft. And we all are, कहीं ना कहीं हम सब में ये पोटैटो की झलक होती है. कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने इस तरह से रिएक्ट किया हो कि पहले हम बहुत स्ट्रांग बनते हैं और जैसे ही कोई अच्छा एनिमी आता है, we become very weak. We become very weak, right? So these are the potato people. The second kind of people are egg people. The second kind of people are egg people. The egg people, egg बाहर से थोड़ा हार्ड होता है, but अंदर से it is liquid. But when it faces this boiling water, when it faces this enemy called boiling water, क्या होता है? Just the opposite. बाहर का लेयर वीक हो जाती है एंड अंदर से we tend to be strong. They tend to be very strong. They tend to be very strong from inside. So these are the people, and हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक people की भी झलक होती है. कभी कभी there are situations in life when we tend to be very strong from outside, but अंदर से we are really weak. But when we face an enemy, अंदर से we tend to become very strong emotionally, or very very strong emotionally, and बाहर से we become very very emotional kind of thing, right? So this is the second kind. This is the second kind. The third kind is what I like the most. It is the coffee people. Coffee people. So coffee people are those people. So what does it do? Coffee, when we put it in boiling water, it changes the enemy. It changes the flavor of the water, right? So this is something that you all want to be, guys. We all will face some sort of situation in life which may be difficult, but it is our attitude. It is our attitude of how we face the enemy that defines us. That defines us. So potato people, egg people, coffee people. एक सामने एनिमी है, नॉट रियली एन एनिमी, बट बहुत सारे लोगों को एग्जाम से डर लगता है. एग्जाम से डर लगता है, वो डर जाते हैं. कुछ लोग डर जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाते हैं, एंड कुछ लोग उस एग्जाम का फायदा उठाते हैं एंड वो दुनिया को दिखाते हैं कि एक्चुअली में क्या है. सो कॉफी जब बॉइलिंग वाटर में जाता है तो दुनिया को दिखाता है कि व्हाट इट इज मेड ऑफ. दुनिया में उसकी खुशबू आती है. And these are the kind of people who actually succeed, who actually changes the enemy. So अगर तुम्हें लगता है कि एग्जाम तुम्हारा एनिमी है बच्चों, अगर तुम्हें लगता है एग्जाम तुम्हारा एनिमी है, be like coffee. Use that exam. This is an opportunity. Use that exam. This is always an opportunity to showcase the world what you are actually made up of, right? So this is how we define three kind of people. And again, my experience is this: in life, things happen around us, things happen to us, but the only thing that truly matters is how we choose to react to it and what we make out of it. So guys, each and every one of us, be like coffee. Be like coffee, right? So चीजें कैसे करनी है? Be like coffee, right? So do not be nervous. This is just a medium, because बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि एग्जाम से डरते हैं. They do not give exams. They do not give mock exams कि मुझे डर लगता है लोग क्या कहेंगे. What if I do not score well in the mock exam? I'm not talking about the original exam. लोग क्या कहेंगे? मेरे को टेस्ट से बहुत डर लगता है. What if I score low? What will my parents think? What will my neighbors think? What will my relatives think? That he is not scoring, he is not capable of doing things. Stop thinking about those guys. Okay? And this is not only true for IIT JEE, but for any examination. But for any examination, right? So what you need to do, guys, in the last 1 month for the February attempt, what you need to do, and what I used to do in the last 1 month. I used to do a lot of self-study without any distraction. ठीक है? तो बेसिक रूल इज जितने घंटे का एग्जाम है, उतने घंटे की सेल्फ स्टडी या उससे ज़्यादा घंटे की सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए मिनिमम. सो इफ इट इज़ एन एग्जाम ऑफ 3 hours, इफ वी टॉकिंग अबाउट JEE मेंस, मोस्ट एग्जाम्स आजकल 3 घंटे के उसके अंदर है. So make sure whenever you are studying for 3 hours at a go. 3 घंटे से पहले उठना नहीं है. Not even for water break, not for toilet break, not for any kind of break. When you are sitting, you make sure that you're sitting regularly for 3 hours. I used to do it a lot. I used to make sure, because मैं 3 घंटे नहीं, I used to sit for 3.5 to 4 hours. 3.5 to 4 hours, because I know कि अगर मैंने 4 घंटे अपनी कंसंट्रेशन बना ली तो 3 घंटे के एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन, बेसिक रूल है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो उतनी ही शिद्दत से देखना है जितनी शिद्दत से तुम फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो. एंड इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप
early. Last question में जाते जाते your energy will be very down, and even if the last question is easy, you will not be able to attempt. You will not be able to attempt, right? So the basic rule is जितने घंटे का एग्जाम है उतने घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम. So 3 घंटे का एग्जाम है, make sure that you're sitting for 3 hours at least, and if possible 3.5 to 4 hours. Because अगर तुम 4 घंटे एक साथ बैठोगे तब तुम्हारी 3 घंटे की कंसंट्रेशन आएगी, बनेगी. The only thing is you do not want to be missing out on the last questions. So if I'm starting with chemistry and then holding on to physics and last में अगर I'm attempting mathematics part, अगर मेरी सिटिंग कैपेसिटी 2 घंटे की है बच्चों या 1 घंटे की है, तो तीसरे एक सब्जेक्ट पे जाते जाते I'll be totally drained out, and I do not want to be doing that, because तीसरे सेक्शन के जो आसान क्वेश्चंस हैं अगर मैं ड्रेनिंग आउट की वजह से वो अटेम्प्ट नहीं किए, I'll be losing out the most. Right? So the basic rule, जितने घंटे का एग्जाम उतने घंटे का डिस्ट्रैक्शन फ्री सेल्फ स्टडी, एंड दिस इज समथिंग यू ऑल शुड नो. राइट? आजकल के टाइम पे देयर इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट ऑफ मोबाइल फोन्स एंड सोशल नेटवर्किंग. कीप अवे. जीरो सोशल नेटवर्किंग गाइस, जीरो सोशल नेटवर्किंग. कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टा नहीं. No Facebooking, no Instagrams, particularly in the last 1 month, and you should all, hand over your mobile phones to your parents and say bye-bye to social media for at least, not only 1 month, I would say till JEE Advanced. JEE Advanced तक कोशिश करो कि कोई सोशल मीडिया तुम्हारे पास में नहीं है, and self-study time should be at least 2.5 to 4 hours. This in one sitting, obviously. I'm not saying this is for 1 day. This is for 1 sitting. So ऐसी कम से कम 3 सिटिंग्स होने चाहिए. So at least 3 to 4 sittings. 3 to 4 sittings of 3 hours, 3.5 to 4 hours, and then you will be good. Right? So distraction free time, you should be making sure ये हो रहा है सबके साथ. Right? One of the important things, guys. One of the important things, attempt a lot of mock papers. ठीक है? तो होता क्या है? कोई भी अच्छा मॉक तुम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, कोई भी अच्छा तुम मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, जितने भी तुम्हारे मार्क्स आएंगे, यू आर कैपेबल ऑफ स्कोरिंग दैट मच. सो इफ यू आर स्कोरिंग, इफ आई एम अटेम्प्टिंग अ मॉक टुडे, अगर मैं जेईई मेंस का मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूं, एंड इफ आई एम स्कोरिंग 150 मार्क्स, इफ आई एम स्कोरिंग 150 मार्क्स, इफ आई एम हैप्पी विद 150 मार्क्स, आई शुड स्टॉप. आई शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. बट अगर मेरा टारगेट 150 से ज्यादा है, अगर मेरा टारगेट 150 से ज्यादा है, if I want to score 180, then I should be doing something based out of 150. तो 150 से जो मेरी लर्निंग्स हुई हैं, I should be able to attempt. ठीक है? तो मॉक हेल्प अस गिव द रियल पिक्चर कि कितने आने वाले हैं. सो अगर मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं आजकल के टाइम पे और मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है. बट अगर 150 से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, then I need to learn what mistakes I've made in this, and I need to improve upon those. Right? So basically 150 marks अगर आ रहे हैं, it is very important to attempt those mocks and analyze them. And analyze those mock exams. ठीक है? So when I say analyzing, you need to mark out your mistakes. Topic wise. So maths, physics, chemistry, क्या mistakes किए तुम लोगों ने? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चंस गलत थे, व्हाट वर द रॉन्ग क्वेश्चंस, किस सब टॉपिक से थे, व्हाट वर द राइट क्वेश्चंस, किस सब टॉपिक से थे. यू नीड टू मेक दैट लिस्ट. सो कभी कभी क्या होता है, कॉन्शियसली ना, कभी ना ऐसा इट हैपेंस अ लॉट. ठीक है? जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, मुझे लगता था कि मेरा मैथ्स और फिजिक्स काफी स्ट्रांग था. ठीक है? बन गया था. शुरू में काफी वीक था, बट अल्टीमेटली फिजिक्स काफी स्ट्रांग वैसे दिमाग में हो गया था, फिजिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया. बट वेन एवर आई यूज्ड टू गिव द एग्जाम, मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे. इसका मतलब स्ट्रांग लग रहा था, एक्चुअली में था नहीं. सो इट वुड मॉक विल ऑलवेज गिव मी एन आईना. मुझे आईना दिखाता था कि यार क्या दिमाग में जो चीज है, क्या एक्चुअली में वो है या नहीं है. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक एग्जाम्स. यू नीड टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी. द जनरल स्ट्रैटेजी ऑफ जेईई मेंस इज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट विद केमिस्ट्री, मूव ऑन टू फिजिक्स एंड देन मैथ्स. टाइम का क्या ऐसा होता है
कि केमिस्ट्री में यूजली that finish the chemistry in 30 to 35 minutes. ठीक है, they save 25 to 30 minutes on chemistry and distribute that time in physics and mathematics as per their requirement. So normally physics में 70 minutes and this में 80-90 minutes में complete होता है. So this is normal things in which people normally attempt JEE का mains का paper as well as the advanced का paper. Obviously it can vary from person to person. Normally it is this, right? So obviously बच्चों, one of the most important things which I didn't do in my time, I ignored chemistry totally. I totally ignored chemistry and I was focusing on maths and physics. But बच्चों ध्यान से बच्चों, अगर तुमने अच्छा स्कोर करना है JEE मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर, chemistry is the most scoring subject. Me being a maths teacher, I'm saying that. Me being the maths teacher, I'm saying that because the pattern, the exam pattern is such that chemistry में बहुत सारे important चीजें होती हैं. Obviously there are some lengthy चीजें also, but mostly organic and inorganic अगर तुम्हारा strong है, you can attempt chemistry in 30-35 minutes और marks per minute. So there is a criteria called marks per minute. तो marks per minute ना chemistry के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं. Marks per minute. So when you are attempting the paper, how many marks you are getting per minute? वो chemistry के अंदर सबसे ज़्यादा highest होते हैं. Chemistry कभी भी धोखा नहीं देती है. Physics, mathematics can be stronger, can be tougher, can be easier, but chemistry कभी भी धोखा नहीं देती. Chemistry has to be a strong point. So improve. And important चीज़ क्या होती है? अच्छी चीज़ क्या है कि लास्ट के एक महीने के अंदर भी ना तुम नई चीज़ें chemistry की पकड़ सकते हो. You can pick up inorganic. You can pick up some topics of organic which you are weak at. Physics में, maths में नई चीजें पकड़ के उसको डेवलप करना बहुत मुश्किल है. Chemistry के अंदर it can be done. So this is a good part about chemistry. लास्ट के 5 दिन में के अंदर भी तुम एक चैप्टर, एक छोटा सा inorganic का चैप्टर तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जिसके आने की संभावना ज्यादा होती है. Right? So this is one thing that you should all be doing. And for all the young people जो क्लास 8 के अंदर है, क्लास 9 के अंदर है, क्लास 10 के अंदर है, जो JEE मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर अपना सपना देख रहे हैं एंड हु आर मेनली, काफ़ी लोग मैथ्स की तरफ ओरिएंटेड होते हैं क्लास 8, 9, 10 के अंदर. बट बच्चों अगर JEE मेंस के अंदर टॉप रैंक निकालना है, टॉप रैंक आई मीन टॉप 200, टॉप 400 के अंदर आना है, केमिस्ट्री हैज़ टू बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे भी करो केमिस्ट्री हैज़ टू बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. मैथ्स फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बट अगेन देर आर सम टाइम्स जब मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आता है, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आता है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट बहुत कम टाइम पे आता है, कम बार आता है. सो केमिस्ट्री हैज़ टू बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट इफ यू हैव टू बी वेरी गुड इन score well in JEE mains, right? So attempt JEE mains level mock papers, identify your target and set your target. ठीक है, तो अपना लेवल आइडेंटिफाई करो कि मैं किस लेवल का हूं और सेट योर टारगेट. ठीक है, सो सेट योर टारगेट कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं कम वॉट में, मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं जो मर्जी हो जाए. एंड अगर वो मॉक्स में उतने मार्क्स नहीं आ रहे, आई नीड टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. सो अगर माई टारगेट इज 180 मार्क्स and if I'm scoring around 150 marks in the mocks, so 30 marks are difference. I need to make sure that I identify 6 topics, 7 topics, 8 topics more wherein I will attempt those paper, make those topics stronger and add those 30 marks to 150 to achieve my target. Very important. ठीक है. If I talk about mathematics, बच्चों मैथ्स में बहुत सिंपल सी चीज़ है. एज फार एज JEE मेंस इज कंसर्न ना, JEE मेंस का बहुत सिंपल सा फंडा है. सो देर आर मोटा 30 यूनिट्स इंक्लूडिंग +1 and +2 11th and 12th टॉपिक्स. सो 30 यूनिट्स को तुम ना आराम से ब्रेक कर सकते हो 1 यूनिट पर क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है. सो देर आर सम बिग चैप्टर्स जिस पे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आना है, वाई वुड आई डू दैट, वाई वुड आई टेक दैट. अनलेस मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वीक है देयर इज नो नीड टू डू अ लॉन्ग चैप्टर. देयर सर्टेन चैप्टर्स जिसके अंदर से पक्का क्वेश्चन गारंटीड है. क्वेश्चन चैप्टर बहुत छोटे से हैं, सिलेबस बहुत लिमिटेड सा है. इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं विच यू कैन टारगेट नाउ एंड इम्प्रूव अपॉन दोज, make those topics stronger so that you do not miss out on those topics would be statistics, reasoning, vectors, 3D, matrices and determinants, binomial,
sequence, differential equation. So these are the topics जहाँ पे ना syllabus जो है ना बहुत limited है. Syllabus is very limited, very limited. They cannot go beyond. Like in calculus कहीं पर भी जा सकते हैं वो, differentiation integration में कहीं पर भी जा सकते हैं. But these are the kind of topics जहाँ पर syllabus is very limited. Vectors में बहुत कम topics हैं यार. ठीक है? Dot product, cross product, STP, VTP, that is it. 3D में दो ही चीजें हैं, lines and planes. Matrices and determinants, very limited topics. Normally they ask questions on trivial equations. Sequence and series, again, normally they would ask question on the special type of sequences, but AP, GP वाले questions बहुत common है. Binomial, very limited. Reasoning, बहुत छोटा सा topic है. Statistics कुछ है ही नहीं इसके अंदर. And then कभी-कभी, if you're strong with the definite integration, King's rule, that is it. King's rule के अलावा बहुत कम questions आते हैं definite integration में. So guys, these are the kind of topics that you need to make stronger based on whatever has been asked in previous attempt. So please attempt NTA के papers. NTA के papers attempt करो. And maths के अंदर they are very limited. These are 7-8 topics and again the list can go beyond. इसके अलावा there may be some topics जो तुम्हें अच्छे लग सकते हैं अगर तुम्हारा coordinate geometry बहुत strong है. So add 3 to 4 questions of coordinate geometry. So 3 से 4 ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 questions हो गए out of 25. ठीक है? Obviously, if your PNC is stronger, you can add PNC. So मैं ये वो topics बता रहा हूँ जो कि बहुत कम syllabus है. PNC का syllabus वैसे normally ज़्यादा है. Questions आसान आते हैं. हो सकता है कि कईयों का PNC बहुत simple हो. Questions बहुत simple आते हैं. Right? But these are the topics which you should not miss. So 13 questions you can easily attempt in the first 40 minutes. 13 questions you can easily attempt in the first 35 to 40 minutes and 13 into 4 is 52. So you can easily score 50 marks in the first 30, 35, 40 minutes if these topics are stronger. Assuming कि हर एक topic से एक question आ रहा है जो कि आता ही है normally. So differential equation से एक question, vector 3D से दो questions आते हैं, matrix and determinant से overall एक या दो questions आती हैं, sequence से एक question आता है, binomial से एक, reasoning stats से एक question आते ही आता है, right? Definite integration से पक्का एक question आएगा. Normally it is on King's rule, right? Coordinate geometry अगर ये strong है, coordinate geometry 3 to 4 questions you can add. So 13 questions हो गए बच्चों, 13 questions हो गए, simple. So if you are strong in these topics, these are the topics where the syllabi is not much, very limited syllabi, and topics like calculus, differentiation, they can go beyond, कहीं पे भी जा सकते हैं, there is no end to it. But यहाँ पर तो यार topics ही बहुत limited हैं. Why would I want to drop out on these topics? एक महीना पड़ा है, इनके अंदर मेहनत करो, इन टॉपिक्स के अंदर मेहनत करो. सो अगेन आजकल का जो लेवल है वो ऐसे ही है कि हर एक यूनिट से नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है. जेई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर मेंस के अंदर एक यूनिट से एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आता ही है. सो दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द टॉपिक्स जहां पर जो सिलेबस है ना बहुत छोटा सा है, बहुत लिमिटेड है. दे कैन नॉट गो बियॉन्ड, राइट? तो यहां पर इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न. तो 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चंस तो श्योर शॉट होने चाहिए. 13 क्वेश्चंस श्योर शॉट होने ही चाहिए, इनको कोई रोक नहीं सकता आने से. अगर ये 13 क्वेश्चन तुमने पहले 30, 35, 40 मिनट के अंदर अटेम्प्ट कर लिए, इनको आइडेंटिफाई करके अटेम्प्ट कर लिए, देयर इज नो एंड यार. बाकी के जो 10 क्वेश्चन है, यू हैव इनफ टाइम. Even if they are difficult to solve, you can always solve those in the given time, provided you have saved time in your chemistry exam. So identify your level, set your targets. Mathematics में इस तरह के topics हैं. Likewise chemistry और physics में भी identify the topics जिसके अंदर syllabi बहुत limited है. Inorganic chemistry, limited syllabi. Obviously it is very vast, but again आता है तो आता है. Organic chemistry के कुछ topics. So identify those topics where you're good at and make those topics even stronger, right? So how to achieve my target? I've already told how to. So identify the topics which have very limited syllabi. Identify the syllabus, the topics जो कि जिसमें बहुत कम syllabi है,
बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है, उन पे वर्क करो, क्योंकि उसमें वो कहीं जा ही नहीं सकते, उसके बाहर जा ही नहीं सकते, इट इज नॉट अलाउड, राइट? So do not leave easy topics. We've already discussed the easy topic of mathematics. Solve previous year questions. I am repeating this time and again. It is very important to solve previous year questions so that you have some idea कि किस तरह के questions आते हैं and कितने marks तुम्हारे उन previous year में आए थे, so that you know, you are mentally prepared कि मेरी उस time पे कितनी rank आ सकती थी, and if you are happy with that rank, okay. But if you're not happy, you need to work hard. You need to work hard you need to identify a lot of more topics, some more topics where you can work hard in this 1 month so that you can improve upon your rank. And again, when I say practice, when I say previous year solving, it has to be time bounded. It has to be time bounded practice. Times के बाद निकलना नहीं है, ठीक है? So if it is an exam of 3 hours, वो 3 घंटे के अंदर ही देना है, चाहे टाइम निकल जाए, छोड़ दो उसी टाइम पे, because that is, you have to be honest, very very honest with yourself, right? So previous year papers with restricted time, very important. So analyze the pattern of your mistakes. किस तरह की mistakes तुम कर रहे हो, because अगर तुमने analyze नहीं किया ना, अगर तुम previous year देते जा रहे हो and if you're not analyzing that exam, so that is the biggest mistake, ठीक है? So अगर तुम exam के exam देते जा रहे हो और तुम analyze ही नहीं कर रहे, so even if you're scoring less marks, doesn't really matter. But if you've analyzed the mistakes that you're making and you are very confident that you will not be making those mistakes again, I think you're done. You're done. Because ultimately we're all humans. हम सब humans हैं, हम सब गलतियां करेंगे और करते रहेंगे. Important चीज़ है कि एक गलती बार बार repeat नहीं करनी है. So अगर तुमने वो सोच लिया कि मैंने कोई गलती की है mock के अंदर and you have identified, you have noted down that mistake in any analyzing copy, and you make sure that you do not repeat that mistake again. So mistakes अपने अपना धीरे धीरे with every subsequent mock test that you will be giving, वो अपने आप कम होती जाएंगी. So analyze the pattern of your mistake. What are the kind of mistakes you are making? Is it the calculation mistake? Is it the conceptual mistake? It is something that you do not know and you're making a guess. So what kind of mistake is it? It is very important. So write it down, write everything down, identify the किस तरह का mistakes है तुम्हारी, and again make strategies to avoid those. So what I used to do was मैं एक तरह के questions के अंदर ना बहुत ज़्यादा गलतियां करता था. वो questions कौन से थे? Which of the following? Questions like which of the following not true? इस तरह के question थे. I used to do a lot of mistakes in these sort of questions. Which of the following is not true? So what I would do was there are a couple of options. मैं पहला पढ़ता था, ये ट्रू लगता था और मैं नॉट को भूल जाता था. आई वुड मार्क ए विदाउट रीडिंग द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, बिकॉज इट इज अ टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन. वी विल ऑल फील प्रेशर जब हम पहली बार इसको देंगे. सो दिस इज द काइंड ऑफ मिस्टेक, मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू डू अ लॉट in my preparation days. So what I started doing was whenever I would read this, I would make sure that I am circling not. I'm circling the not part, ताकि जब मैं दोबारा से उसको पढ़ूं या दोबारा से वेरीफाई करने की कोशिश करूं, आई एम मेकिंग श्योर कि वो नॉट विजिबल है और बहुत बड़ा है. आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट, ठीक है? इस तरह की गलतियां बहुत होती थी. दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ मिस्टेक दैट आई वुड मेक. ऐसी और भी बहुत सारी गलतियां होती थी. सो अगेन एनालाइज द पैटर्न, मेक स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड दोस. सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी. इट यूज्ड टू बी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इन माय टाइम. तो मैं नॉट को बहुत बड़ा सा सर्कल कर देता था जैसे ही मैं रीड करता था क्वेश्चन पेपर, to make sure that not है, उल्टा नहीं है. So this is one kind of mistake that I used to make a lot in my time. So please identify the pattern of mistakes that you are making and avoid strategies to avoid, make strategies to avoid those mistakes. Again, this is something we've already discussed. So strong topics, weak topics. So identify the strong topics, identify the weak topics. This time पे, if you're talking about the February time, do not start anything new. वीक टॉपिक जो है ना उनको छोड़ दो. अभी के लिए फोकस ओनली ऑन द स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स. गिव इनफ टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स. मेक दो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स इवन स्ट्रॉन्गर एंड विल बी गुड, राइट? सो गाइज, एक और चीज जो हम सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं, वी टेंड टू कंपेयर आवर मार्क्स विद द मार्क्स ऑफ अदर्स. आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट एंड आई उस टाइम से मेरा बहुत नुकसान होता था. आई यूज्ड टू डू इट अ लॉट, ठीक है?
तो मैं अपने मार्क्स ना किसी टॉपर के मार्क्स से कंपेयर करने लग जाता था कि यार आई स्कोर्ड ओनली 150 मार्क्स, ही इज स्कोरिंग 200 मार्क्स, व्हाई ही इज स्कोरिंग 200 मार्क्स, व्हाट हैव आई नॉट डन and he is done so that and he is scoring 50 marks more than me. Do not do that. One of the biggest mistakes, because each one is different. There is no comparison between sun and the moon. They both shine when it is their time. ठीक है, तो अपना टाइम भी आएगा, अभी उसका टाइम चल रहा है. What we need to do instead is compare our marks with my previous test. Make sure कि वो जो marks है ना वो improve हो रहे हैं अपने marks से. Do not compare your marks with others. That is the biggest mistake, right? Because there are times when the situations are different. हो सकता है कि if I'm very sure कि बहुत सारे 10th के बच्चे 11th के बच्चे भी ये चीज़ देख रहे हैं. So when you will get into 11th, you will give the first test of class 11th. There might be a stark difference between your marks and the marks of someone जो top कर रहा है, right? Do not start comparing the marks because situations are completely different. हो सकता है कि वो जो बच्चा है वो 8th class से तैयारी करना शुरू कर गया हो. Right? So do not compare your marks. That is one of the most important mistake and most fundamental mistakes which students make. Never compare your marks. Compare करना है तो अपने marks से करो पिछले टेस्ट के. And make sure कि जो हम जो एग्जाम दे रहे हैं, जो subsequent टेस्ट दे रहे हैं, उनमें marks ज़्यादा हो रहे हैं, उनमें marks बढ़ते जा रहे हैं. Please make sure that this is happening. And I will end my session with this saying, the only difference between winning and losing is most often not quitting. And this holds true बच्चों, this holds true. IIT एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो बहुत डिफिकल्ट है, वो लोगों ने बना दिया है, परसेप्शन है डिफिकल्ट, it is not that difficult. And the only difference is not quitting. So those who do not quit, they will most likely win. And history of full of these examples. Steve Jobs failed like a lot of times. People like Elon Musk failed a lot of times. Any successful person, if you talk about, who had a humble beginning, he failed a lot of times. The only difference was they did not quit. And on that note, I would want to end the session because ये ही एक only difference है बच्चों. ठीक है? So अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि यार February का एग्जाम बहुत पास में है एंड अभी तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, डू नॉट डू दैट. बिकॉज दिस एटीट्यूड, इस टाइम पे जो एटीट्यूड है इन डिफिकल्ट टाइम्स डिफाइंस व्हाट यू आर एक्चुअली मेड अप ऑफ. और मैंने स्टार्टिंग में बताया था बी लाइक कॉफी. ठीक है? सो देयर आर 3 kinds of people. देयर आर पोटैटो पीपल, देयर आर एग पीपल एंड देयर आर पीपल हु वी कॉल कॉफी. एंड कॉफी पीपल आर द वंस हु डिफाइन देयर कैरेक्टर बिकॉज दे चेंज what is being given to us, right? So be like coffee, and this is the only difference. The only difference between the people who win and lose is most often not quitting, right? So on that note, let me end the session, guys. And if you have any questions regarding the attempts, please let me know in the comment section. And all the best for the February attempt. Take care.